Namaste. I, JVN Neha Sharma, JVWU Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So our today's topic is selective repeat ARQ protocol for error control of data link theory. Right? In previous lectures, we already studied go back and ARQ protocol and stop and wait ARQ. And this is the last one, selective repeat ARQ. Selective repeat ARQ protocol is come into picture when to overcome the disadvantages of go back and protocol. So why selective repeat protocol? The go back and protocol works well if errors are less, but if the line is poor, it wastes a lot of bandwidth on retransmitting frame because in go back and ARQ you have to go to the nth number of frame to which you the sender didn't get any acknowledgement or the frame is lost or acknowledgement is lost. So you have to go back to the nth number of frame and to transmit all the frames from that nth number frame again. So it wastes lot of bandwidth and lot of time and increase the complexity. So an alternative strategy is selective repeat protocol. Basically, is allowed to receiver to accept and buffer the frame following a damage or lost one. Since selective repeat basically retransmit only those frames that are actually lost or have some error. Otherwise, there is no retransmission of the frame is occur exactly. Okay, so here you can see receiver must be able to accept packet out of the order and receiver must release packet to higher layer in order. The receiver must be able to buffer some packets. So basically in selective repeat ARQ, the sender window size and receiver window size should be equal but greater than 1. So it is not a same as sliding window protocol, right? Because sender window size and receiver window size is not equal to 1, right? Sender window size and receiver window size should be equal but greater than 1. And here only lost and damaged frames are retransmitted, not all the frames. So it basically it is also useful with the bandwidth, increases the performance of the mod, right? Because there is no loss of bandwidth occur here because of only retransmitting the frames which are lost or damaged. Okay, so retransmission request is either implicit or explicit. In implicit, you get acknowledgement. In explicit, you get MAC. MAC is for negative acknowledgement. ACK is for positive acknowledgement. So implicit, the receiver acknowledgement acknowledges every good package. Packets that are not acknowledgement before a timeout are assumed lost or in error. So here is using independent acknowledgement rather than the cumulative acknowledgement like in go back and right. So uh, you received the acknowledgement for each and every packet the sender sent to the receiver. Uh, and explicit NAP is can request the transmission of just one packet, and the approach can expedite the retransmission, but is not strictly needed. So one or both approaches are used in this practice, and selective repeat protocol is mostly identical to Jv'n, except the buffer are used and the receiver and the sender each maintain the window of size. SRP work better than link is very unreliable because in this case retransmission tends to happen more frequently. Selectively retransmitting frame is more efficient than retransmitting all of the frames. So SRP also require full duplex link, and in go back and you see half duplex link. But here you can see full duplex link because it has to retransmit the frame which is lost. So it has to figure out the which frame is lost, right? It's just like similar to go back and you just go to the frame that is lost and you transmit all the frames. So here you need full duplex link for the identification and for the calculation, right? Which frame acknowledgement is not uh, sent by the receiver to and didn't get by the sender, right? So sender's window size equal to receiver window size but greater than 1. Okay, and sender can transmit new packets as long as the number is of it w of all unacted packets, because
बेसिकली सेंडर उतने पैकेज भेज सकता है जितनी उसकी विंडो साइज है, कॉस्ट, एंड सेकंड जिसकी भी उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है वो उन सारे पैकेट्स को भेज सकता है, ठीक है। एंड सेंडर रिट्रांसमिट द अनएक्ट पैकेट्स, और जिसकी उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है टाइम आउट के बाद में और जिसका उसे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली है वो उसको उन पैकेट्स को भेज देगा। तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट ऑल करेक्ट पैकेट्स, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, जो भी उसको पैकेट मिल गए हैं करेक्टली उन सबके एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। एंड रिसीवर स्टोर द करेक्ट पैकेट अंटिल दे कैन बी डिलीवर्ड इन ऑर्डर टू द हायर लेयर, और वो रिसीव करता जाएगा जब तक कि उसको ऑर्डर मतलब उसको पैकेट्स ऑर्डर में मिल रहे हैं, सिंक में मिल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी द सेंडर एंड द रिसीवर, राइट। सो विंडो साइज इज 2 here, राइट। तो रिसीवर की विंडो साइज भी 2 है और सेंडर की भी विंडो साइज 2 है। तो हम यहाँ पे क्या भेजना है, पहले 0 एंड 1 भेजना है। तो फ्रेम 0 गया, फ्रेम 1 गया, उसको ऑर्डर में मिल गया, उसने क्या किया, दोनों की एक्नॉलेजमेंट भेज दी। अब उसे क्या चाहिए, एक 2 चाहिए, उसने बोल दिया। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उसने बोला कि सेंडर को कि अब आप मुझे फ्रेम नंबर 2 भेजो, ठीक है। तो सेंडर की विंडो क्या हो गई, अब वापस स्लाइड टू द राइट, right? Like we see in sliding window protocol and go back, and so slide it to right, and now again 2 packets are sent because window size is 2, right? So frame 2 and frame 3 इसमें भेज दिया सेंडर ने, लेकिन रिसीवर को फ्रेम 3 मिला है, फ्रेम 2 नहीं मिला है, फ्रेम 2 लॉस्ट हो गया। तो उसने क्या किया, उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी फ्रेम 2 की कि मुझे फ्रेम 2 नहीं मिला है और मुझे फ्रेम 2 चाहिए। तो पर उसने फ्रेम 3 को भी रख लिया है अपने बफर में, मतलब अपनी क्यू में उसने ले लिया है। उसे डुप्लीकेट मान के या फिर उसने गलत फ्रेम मान के, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम मान के उसको वापस नहीं भेजा है। उसने एक्सेप्ट कर लिया है फ्रेम 3 को अभी के लिए, बट वो चाह क्या रहा है, फ्रेम 2। तो इसके लिए उसने उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दिया सेंडर को। सेंडर ने क्या किया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देखते ही फ्रेम 2 को रीट्रांसमिट कर दिया। अब इसको फ्रेम 2 का मिल गया तो इसने इसको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। तो नाउ 0 1 2 3 इसे मिल चुका है। तो द सेंडर ओनली रीट्रांसमिट फ्रेम फॉर विच नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट उसको मिलेगी, नहीं तो वो नहीं भेजेगा, राइट। और द फ्रेम इज लॉस्ट, ओके। So here you see the frame 3 is not retransmitted, and means to the and negative acknowledgement is also not retransmitted to the sender because receiver expected the frame 2, but it gets frame 3 and send the negative acknowledgement for the frame 2 to the sender, right. But to synchronize the frames in receiver side, like you see, uh, now when 2 is lost, frame 2 is lost, तो R get the frame 3. So R में अभी क्या होगा, 0 1 2 1 3. Then after retransmitting the frame by the standard, अब इसके पास में क्या हो गया, 0 1 3 2, पर उसे चाहिए क्या, 0 1 2 3। तो यहाँ पे हम फ्रेम को सिंक्रोनाइजेशन में रखने के लिए क्या करेंगे, सॉर्टिंग यूज करेंगे। नाउ receiver is equal to 0 1 2 3. So now frames are in sync and received in order by the receiver, right. So sorting technique is used here to synchronize the frames at the receiver, and here you can only send the retransmission, you only the sender retransmit the frame only which are sender get the negative acknowledgement, right. एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट उसको तभी मिलेगी जब उसका पैकेट लॉस्ट हो गया है, या फिर उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली नहीं है, उसकी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई है, टाइम आउट हो गया है, तो उसको समझ आ जाएगा कि ओके मेरा फ्रेम लॉस हो गया है और मुझे दोबारा भेजना है। तो इन दो ही कंडीशन में रीट्रांसमिशन होगा, या तो आपका फ्रेम लॉस हो गया है या फिर आपकी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट ARQ. So what is major differences, right? So in go back and major difference तो इनके नाम से ही है। सिलेक्टिव रिपीट में आप सिलेक्टिवली उन्हें ही रीट्रांसमिट कर रहे हैं जो फ्रेम जिसका फ्रेम लॉस हो गया या फिर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई है, राइट। बट गो बैक एंड में आप उस फ्रेम पर जाते हैं वापस जो लॉस हुआ है, और फिर वहाँ से लेके जितनी भी नेक्स्ट फ्रेम्स हैं विंडो साइज के लिए, लाइक अगर विंडो साइज 2 है और हमारा 2 का फ्रेम लॉस हुआ तो 2 3 आप दोबारा भेजोगे,
पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें खाली 2 ही दोबारा जाएगा, 3 दोबारा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये डिफरेंस हो गया। इससे क्या हो रहा है कि बैंडविड्थ का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको बार बार मिल रहा है, फिर वो डुप्लीकेट मान के उसको डिस्कार्ड कर रहा है रिसीवर, राइट। तो बैंडविड्थ का लॉस हो रहा है, लेकिन इन सिलेक्टिव रिपीट में बैंडविड्थ का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। और गो बैक एंड कॉम्प्लिकेटेड कम है, क्योंकि उसमें सॉर्टिंग नहीं है, उसको ध्यान नहीं रखना पड़ रहा कि मेरा सिंक में है कि नहीं है। उससे तो सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि अगर उसको नेक्स्ट 2 चाहिए तो उसे 2 चाहिए, अगर उसको 2 नहीं मिला है तो मतलब कि वो टाइम आउट कर देगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, टाइम आउट हो जाएगा, सेंडर दोबारा भेजेगा सारे फ्रेम। तो उसको सिंक में चाहिए, ठीक है, उसको सिर्फ इससे मतलब है। बट सिलेक्टिव रिपीट में आप खाली वही फ्रेम भेज रहे हैं जिसको जो उसे चाहिए, पर उसे नहीं मिला है, चाहे वो सिंक में है या नहीं है, उससे इससे कोई मतलब नहीं है, उसे फ्रेम से मतलब है। सिंक में वो खुद कर लेगा सॉर्टिंग करके, पर सॉर्टिंग के लिए भी हमें क्या चाहिए, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सॉर्टिंग चलानी पड़ेगी। तो इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, सिलेक्टिव रिपीट। एंड मोस्ट ऑफनली जो हम यूज़ करते हैं वो गो बैक एंड यूज़ करते हैं। सिलेक्टिव रिपीट जो है वो बहुत कम यूज़ होती है, लेस ऑफन यूज़ होती है, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है थोड़ी फ्रेम को सिंक्रोनाइजेशन में रखने के लिए। पर गो बैक एंड में सिंपल है, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, बट इन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस selective repeat ARQ is better than the go back end. So that's all for this class. So um, yeah, thank you so much.